चलो ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। साइबोर्ग पढ़ लिया होगा, आई होप। नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लेना साइबोर्ग कल्चर। स्टार्ट विद साइबर फेमिनिज्म। The attempt at appropriating science for the empowerment of women has taken many forms. कितना ठीक है। तो ये जो अटेम्प्ट है एट अप्रोप्रिएटिंग द साइबर स्पेस यू ऑल अंडरस्टैंड, है ना? तो साइबर स्पेस गई, साइबर स्पेस को अप्रोप्रिएट करना फॉर विमेन एम्पावरमेंट, उसने बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स ले ली हैं। जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटीज क्रिएट हो गई हैं कि अगर आप किसी को हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे आके बताइए, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई ईव टीज हो रहा है या कुछ और हो रहा है, यहाँ आके बताइए। काउंसलिंग शुरू हो गया है, साइबर सोलिस कहते हैं जिसको। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बन गए हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इनफैक्ट वुमेन हेल्पलाइंस हो गई हैं अभी, एंड आर्ट वर्क्स. So here I build on an earlier argument that I have made that a counter public sphere might be emerging in cyber cultures through its appropriation by women. तो ये कह रहे हैं कि अपना जो साइबर स्पेस में इन्होंने अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया होगा, जो आपने पढ़ा होगा। ये कह रहे हैं कि एक नया एक काउंटर पब्लिक स्फीयर क्रिएट हो रहा है, इट माइट बी इमर्जिंग साइबर कल्चर में थ्रू इट्स अप्रोप्रिएशन बाय वुमेन। जिस तरह से वुमेन अप्रोप्रिएट कर रही हैं उसको, तो है क्या साइबर फेमिनिज्म? इट इज थ्योरेटिकली इन्फॉर्म्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ साइबर कल्चर्स. व्हाट इज अप्रोप्रिएशन? टेल मी. Appropriation, the act of appropriating something. What kind of dictionary is that? So appropriating a concept means taking an idea, taking a theory or cultural element from its original context and adopting it for one's own use, often without permission or understanding its original significance. उसको आपने समझा नहीं, ओरिजिनल सिग्निफिकेंस नहीं समझा कभी कभी, और उसको अडॉप्ट कर दिया। दो तरह से हम अप्रोप्रिएशन को भी हम दो तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ तो भी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि आपने कोई एक कॉन्सेप्ट लिया, उसको आपने अप्रोप्रिएट किया। दूसरी तरफ हम इसको नेगेटिव तरह से भी देखते हैं कई बार कि यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ओरिजिनली इट वाज, और आपने बस इसको यूज कर लिया, स्टील कर लिया किसी का कोई कॉन्सेप्ट। दो तरह से देखते हैं, ठीक है? तो साइबर फेमिनिज्म भी वही है। साइबर फेमिनिज्म इज the appropriation of cyber cultures in the information age. It includes close analysis and attempts to access the material contexts of cyber cultures, जैसे jobs, education, community, as well as cultural forms of this appropriation, जैसे कि art. So cyber feminism in the feminist response is the feminist response to and negotiation with the contemporary culture's extensive informatization. तो ये है साइबर फेमिनिज्म, एक फेमिनिस्ट रिस्पॉन्स है, और नेगोशिएट भी कर रहे हो आप उसके साथ, रिस्पॉन्स भी दे रहे हो उसको विद द कंटेम्पररी कल्चर्स एक्सटेंस। कितना ज्यादा इन्फॉर्मेटाइजेशन हो गया है ना सब चीजों का, अभी हर चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, साइबर स्पेस में अवेलेबल है। So one form of feminist theorizing about cyber cultures is to show its linkage with and embeddedness in real material lives, है ना? एक फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थियोराइजिंग, साइबर कल्चर को आप एक जब थियोराइज कर रहे हो, उसका एक फॉर्म है कि उसका लिंक शो करना with the real material lives. So it is not adequate to treat virtual environment as providing greater freedom to women. ऐसा नहीं है। I'm audible, right? मेरे फोन में आई सी कि मैं अटक गई हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वुमेन को तो उनको ग्रेटर फ्रीडम मिल जा रही है।
but to locate these environments in actual material social practices within which the women live and work. अगर आपको लग रहा है कि ये जो साइबर स्पेस है एक, जो हेल्प कर रहा है, कम्युनिटीज बिल्ड कर रहा है, विमेन को हेल्प कर रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट रियल लाइफ में ढूंढ के लाना, एक ऐसा सोशल प्रैक्टिस ढूंढ के लाना जहां पे विमेन रह रही हैं, वर्क कर रही हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट वहां क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है. Women's networks are a key form of online usage. They constitute a means for women to enter the public sphere. Computer literacy and networking thus provide the women, as traditional education did, a mode of leaving the circumscribed space of the home. तो जो women के बहुत सारे networks बने हुए हैं ना, और ये एक की फॉर्म है ऑनलाइन यूजेज का, नेटवर्क्स क्रिएट हो गए हैं अभी. दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, एक जरिया है विमेन के लिए कि वो पब्लिक स्फीयर में एंटर कर रही हैं उस वजह से. जैसे कि कंप्यूटर लिटरेसी है या नेटवर्किंग है, ये क्या प्रोवाइड करती है विमेन को, जो ट्रेडिशनली जब विमेन को एजुकेशन भी नहीं मिलता था, तो जब एजुकेशन मिला, वो व्हाट इज दैट, अ मोड ऑफ लीविंग द सर्कमस्क्राइब्ड स्पेस ऑफ द होम. आप एक, जहां पे आपको बंद कर दिया गया है एक घर के अंदर, उस स्पेस को छोड़ के बाहर निकलना, वो प्रोवाइड कर रहा है. सो द पब्लिक स्फीयर हैज बीन ट्रीटेड एज द साइट ऑफ रैशनल डायलॉग. Habermas. However, this means perpetuating the old divide between reason and emotion. तो ये कह रहे हैं कि अब जो ये पब्लिक स्फीयर है, इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ साइट ऑफ, जहां पे रैशनली आप कोई बात कर रहे हो, रैशनल डायलॉग चल रहा है, लेकिन दिस मीन्स perpetuating the old divide between reason and emotion. And since traditionally women have been seen as emotional, तो विमेन तो इमोशनल ज्यादा रही हैं हमेशा से, उसको माना भी वही गया, इमोशनल फूल्स, तो रैशनल स्फीयर में घुसना आसान थोड़ी होगा. Since traditionally women have been seen as emotional creatures and men as the rational ones, it excludes the possibility of the woman's participation in the public sphere. Feminist appropriations of cyberspace allow counter publics based on rejected or rational aspects as sentiment to be formed. तो ट्रेडिशनली विमेन हैव बीन सीन एज इमोशनल, और मेन को टैग दे दिया कि ये है रैशनल वंस, तो ये पॉसिबिलिटी ही एक्सक्लूड हो जाती है ऑफ द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक स्फीयर. कैसे करेगी, क्योंकि पब्लिक स्फीयर तो रैशनल है. ये डायलॉग देके, ये डिस्कोर्स देके पीछे. तो फेमिनिस्ट अप्रोप्रिएशन जो है साइबर स्पेस का, वो अलाउ करता है काउंटर पब्लिक्स. It's not a public sphere entirely, it's a counter public based on rejected or rational aspects as sentiment to be formed. A feminist reclamation of cyberspace as a more open public sphere requires not an escape from but a return to embodiment. So greater numbers of women users, online support groups and political activism alters the public sphere as a feminist counter public sphere. Demands for rights, information about the laws, cultural expression, health advice are all central to such a reclamation. अब reclaim कर दिया ना उन्होंने साइबर स्पेस को. तो एक फेमिनिस्ट reclamation जो है साइबर स्पेस का to a more open public sphere requires not an escape from but a return to embodiment. जितने ज्यादा नंबर ऑफ women यूजर्स, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, वो ऑल्टर कर देती है इस पब्लिक स्फीयर को एज अ फेमिनिस्ट काउंटर पब्लिक स्फीयर है ये. तो अगर वैसे नहीं जा सकते तो ऐसे सही, ये ज्यादा सेफ उनको स्पेस लग रहा है शायद. सो women in India, statistics reveal, जो इंटरनेट वगैरह का सारा, use the internet more for personal activity than professional work. So women use it more for personal work. So this means their use of ICTs depends on their family responsibilities and domestic arrangements. This suggests, unsurprisingly, that the woman's use and work on the internet is embedded in her material context. कि जिस
मटीरियल कॉन्टेक्स्ट में वो रह रही है, जितना जैसा जैसा इकोनॉमिक बेस है, उसी हिसाब से वो इंटरनेट को भी यूज़ कर रही है, बट इट्स मोस्टली फॉर पर्सनल यूज़। तो जो आईसीटी का यूज़ है उनका, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? उनके पास कितना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना डोमेस्टिक अरेंजमेंट कैसा है उनका। However, the feminist appropriation of the materiality of cyberspace is altering in significant ways. तो जिस तरह से अप्रोप्रिएट किया जा रहा है इस मटीरियलिटी को, इस स्पाइस साइबर स्पेस को, चेंज होता जा रहा है। Women owned and operated e-businesses have grown since the 1990s. अभी women entrepreneurs बनी हुई हैं। India's famous self-employed women's association, SEVA, for instance, has used ICTs to create extensive databases, mailing lists and networks. तो ये है, आप चेक कर सकते हो। Elected women representatives in politics have been enthusiastic about the new technologies. They have learned, in fact, आप देखोगे ना, अगर हम एक सैंपल ले women का, हमारी मदर्स की जनरेशन का, कि ज़्यादा जल्दी कौन सीख रहा है, तो आई बिलीव इट्स द मतलब फादर और मदर में, उनको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, नया-नया सीख रहे हैं। कौन ज़्यादा जल्दी सीख रहा है? आई थिंक द मदर्स आर लर्निंग इट समहाउ क्विकली। तो वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिक्स में भी, वो भी बड़ा एंथुसियास्टिक रही हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एज़ अ मीन्स ऑफ वाइडनिंग देयर मास बेस, पॉपुलराइजिंग देयर एजेंडा। दिस इज़ द फेमिनिस्ट मटीरियल अप्रोप्रिएशन। तो ये इस तरह से उन्होंने अप्रोप्रिएट किया है साइबर कल्चर्स को। फिर आता है साइबर फेमिनिस्ट आर्ट एंड कल्चर। अब इन्फॉर्म्ड बाय थ्योरीज ऑफ साइबॉर्ग्स एंड फेमिनिज्म एंड डिटरमाइंड टू यूटिलाइज साइबर स्पेस फॉर देयर ओन एंड्स, साइबर फेमिनिस्ट जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, दे हैव बिगन टू डेवलप अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद वर्चुअल वर्ल्ड्स। अभी देखो ना, आपकी बुक पब्लिश भी हो जाती है, यू डोंट हैव टू इवन गो फॉर द हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में ही पब्लिश हो गया, अवेलेबल। even the papers, e-papers हैं। Building on the work, please note this is the most important name here, also in cultural studies, Donna Haraway. So we have Donna Haraway, Sadie Plant, Catherine Hales, and or भी other thinkers. So building on their works and other thinkers on cyber culture, cyberpunk fiction by feminists, note the names, and cyber feminist artwork such as VNS Matrix, they propose a new form of the virtual। कि जब हम इन लोगों के वर्क्स देखें, साइबर पंक फिक्शन, व्हाट इज साइबर पंक फिक्शन? साइबर पंक फिक्शन क्या होता है? सब इस तरह का आपने देखा होगा। इट इज द सब जॉनर, सॉरी व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो क्या है साइबर पंक फिक्शन? इट्स अ सब जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन सेट इन हाई टेक डिस्टोपियन फ्यूचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय लो लाइफ हाई टेक है बहुत। तो इमर्जिंग इन द 1980s, इट फोकसेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरनेटिक्स। तो फ्यूचर में अभी देखो 1980s में अगर वो एआई की बात कर रहे थे, तो अभी वो आ गया है। विद काउंटर कल्चर्स, एंटी हीरोज नेविगेटिंग एंड रेजिस्टिंग अ डीकेइंग सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये न्यूरोमांसर इस जॉनर का। ठीक है, तो वैसे ही साइबर पंक फिक्शन है, फेमिनिस्ट्स ने लिखे हैं, जो जैसे ये है इन्होंने, और साइबर फेमिनिस्ट का आर्ट वर्क है जैसे ये। तो ये एक नया तरह का वर्चुअल शो कर रहा है। साइबर कल्चर फॉर फेमिनिस्ट साइबर पंक is a product of an unequal system of finance, technology, labor and cultural stereotyping, जहाँ पे women's contribution is ignored और undervalued। तो क्या है ये साइबर कल्चर फॉर फेमिनिस्ट साइबर पंक?
जो अनी यहाँ पे भी अनइक्वल सिस्टम है, जहाँ पे women contribution is ignored, undervalued, emphasis on reason and scientificity, ignores emotional responses to and relations with technology. फिर a female body is still sexualized for male consumption and the woman's relationship with technology is never seen as primary. जैसे वो तो कर ही नहीं सकती, मुझे लगता है they'll do better. Cyber culture for feminist cyberpunk is a product of an unequal system of finance, technology, labor, and cultural stereotyping. So, feminist cyberpunk sees technology as rooted in a specific social and cultural context. कि जो साइबर पंक है, जो टेक्नोलॉजी है, सॉरी, इट इज रूटेड इन एक एक कोई स्पेसिफिक कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट है। तो जो फेमिनिस्ट साइबर पंक है वो देखता है इसको एक अलग तरीके से। आईसीटीज इमर्ज इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसनेशनल लेबर एंड फाइनेंशियल फ्लोज। द वायर्ड वर्ल्ड इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड। तो जो फेमिनिस्ट साइबर पंक है, इट शोज मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस एज इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब आप देख रहे हो, यूजुअली विमेन को इन्हीं चीज़ों के लिए स्टीरियोटाइप किया जाता था ना कि आप क्या दिखाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी, आप फैमिली, आप कुकिंग, ये सब अपने वर्क्स में दिखाओगे। तो इनिशियली तो यही किया होगा विमेन ने कि यार छोड़ दिया ये सारे टॉपिक्स को और वर्ल्ड वॉर पे लिख रही हैं, पैट बार्कर हैं जैसे, है ना? इवन नाम से भी पता नहीं चलता कि विमेन है, बट शी रोट ऑल अबाउट द वर्ल्ड वॉर। तो अभी देखो ना, करना ही क्यों है? अरे हम लिखेंगे यार, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इमोशंस के बारे में लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? फेमिनिस्ट साइबर पंक वो दिखाता है मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सेज हैं टू एंड मोड्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द आईसीटीज। Pat Cadigan, for instance, renders cyberspace and its attendant features as a shamanic, shaman पता ना आपको, वही जादू टाइप, quasi mystical space in her novels. So she has shown, Pat Cadigan, cyberspace को दिखाया है। Writers like Cadigan, Peary, Scott find the theme of the transcendence. Please note these names, especially fiction में. So find the theme of the transcendence of the body so central to male cyberpunk and illusion. तो ये जो मेल साइबर पंक फिक्शन है उसमें ट्रांसेंडेंस ऑफ द बॉडी इज द वेरी सेंट्रल थीम। तो इन लोगों ने उस थीम को कहा है बेकार है, इल्यूजन है। फॉर द वाइट और कलर्ड woman, the body remains the central. It remains central to the structures of exploitation and freedom, justice, empowerment. The transcendence of the body once again privileges the mind over matter. A stereotype that since the early modern period has been gendered, where the male is mind and woman matter. Hence, the escape from the body is a male fantasy, the search for the realm of pure consciousness. Whereas for the woman, the body is at the center for the search for identity and emancipation. इसीलिए feminist cyberpunk sees computers, ICTs, body modification, technologies, and cyberspace not as a means of escaping embodiment as much as an augmentation and regrounding of the body. ठीक है, नथिंग मच हियर। आपको बस चीज यहाँ पे समझना है कि क्या है साइबर स्पेस, क्या है साइबर पंक फिक्शन, क्या है, इनमें नेम्स कौन कौन से हैं, किन किन लोगों ने कैसे कैसे लिखा है, और किस तरह से जो अनइक्वल अगेन डिविजन है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको उससे उभरे हैं, किस तरह से। साइबर आर्ट की बात करें, इन्फ्लुएंस्ड बाय फेमिनिस्ट थ्योरी, स्पेशली लूस इरिगरे एंड हेलेन सिक्सू, इनसे इन्फ्लुएंस हुए साइबर आर्ट वाले। फर्स्ट बिकेम मैनिफेस्ट ऑनलाइन एज वीएनएस मैट्रिक्स। क्या है वीएनएस मैट्रिक्स? Artist collective founded in Adelaide, Australia in 1991 by these people. Their work included installations, events, and posters distributed through internet, magazines, and billboards, taking their point of departure in a sexualized and socially
provocative relationship between women and technology, the works subversively questioned discourses of domination and control in the expanding cyberspace. They are credited as being amongst the first artists to use the term cyber feminism to describe their practice. According to the artist Anna Covey, they outright coined the term along with Sadie Plant. Their first use of the term cyberfeminist was in 1991. ठीक है? The VNS Matrix was a group of four Australian-based artists. ये नाम आ गए फिर से इनके. This was the VNS Matrix agenda, politics, and slogan. You read this. We are the modern cunt, positive anti-reason, unbounded, unleashed, unforgiving. We see art with our cunt, with we make art with our cunt. We believe in Jussen's madness, holiness, and poetry. We are the virus of the new world disorder, rupturing the symbolic from within, saboteurs of Big Daddy mainframe. The clitoris is the direct line to the. Oh my god, they are savvy. To the Matrix, VNS Matrix. Terminators of the moral codes, mercenaries of slime, go down on the altar of abjection, probing the visceral temple. We speak in tongues, infiltrating, disrupting, disseminating, corrupting the discourse. We are the future cunt. The idea, it is very shocking. कोई ट्रेडिशनल आदमी पढ़ ले तो बेहोश हो जाएगा ये पढ़ के. The idea was to shock, even as their feminist appropriation of technology received the enthusiastic support from theorists like Sadie Plant. Sexual difference, identity, and the question of women's weaves and networks were assimilated into techno art forms here by VNS Matrix, and thus marked what a departure from masculinist capitalist technology. So more feminist subcultures forms within cyberculture emerged और भी बहुत सारे साइबर सब कल्चर्स इमर्ज हुए 1990s में जैसे एम्बिशियस बिच a CD-ROM art piece created by Merita Lulia. क्या नाम था? बाद में देख लेना. For instance, the image of the bitch as a centerpiece. Donna Haraway's more recent Species Manifesto replaces the cyborg with the dog. They're just trying to do something, extremely something that is shocking to the audience and very. In 1994, VNS Matrix was back with its CD-ROM, all new gen. So combining the video game with SF, this once more focused on the slut, by now called cyber sluts, with a play on gen, taken to mean both generations and genders also. The all new gen is not just genders, is not just generation, it's also gender. The parody used extensive vaginal imagery. जैसे ये तो आपने पढ़ ही लिया, यहाँ पे देखो ना आप, imagery देखो आप. Look at this. Look at the imagery they have shown. तो यहां से आप समझ ही गए कि किस तरह का लिख सकते हैं. तो और वजाइनल इमेजरीज इन्होंने यहाँ पे शो किया. The idea was to replace or at least offer an alternative to computer games that were exclusively male centered, with soldiers ripping up spaces, male explorers, city builders, images of masculine conquest and penetration, actions in which predominantly male players participate.
Rather than be reduced to a sexual object defined and described by the male techno user, cyber feminists transform cyberspace into the realm of the decidedly irreducibly female, where pejorative terms like sluts used by men as categories of uh, disparagement and marginalization, cyber feminists and turned them into पॉजिटिव आइडेंटिटी, जहां पे ये लोग मेल यूजर्स ये सारी टर्म्स यूज कर रहे थे ना, स्लट्स को थे, उसी को इन्होंने एक पॉजिटिव आइडेंटिटी में क्रिएट किया टू डिस्क्राइब साइबॉर्ग और वायर्ड वुमेन. द बिच और द स्लट बिकम्स अ टर्म ऑफ सेल्फ definition. See for example bitch from hell. Okay, you can check this out. And that's it. We end finally with feminism. Donna Haraway is important here. Read, okay? तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है पढ़ने को साइबर इसमें, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर नया है आपके लिए तो फिर ज़रूर पढ़ना है. द नेम्स एटलीस्ट राइट देम डाउन विद यू, लुक व्हाट दे हैव डन, एंड दैट्स इट. सो we'll start from the book next chapter, and till then I'll give you your today's work. ठीक है? Thank you. See you. Bye bye.